चलिए फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं यश मकवाना। मैं आपसे का स्वागत करता हूं और आज हम रिव्यू करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एसर एस्पायर 7 का, जिसमें 8 GB रैम और 512 GB SSD है दोस्तों, जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने ऑनलाइन इसको परचेज किया है। ये वीडियो ओनली फॉर अनबॉक्सिंग के लिए रहेगा। मैं इस लैपटॉप को 3 वीक तक यूज़ करूंगा, उसके बाद इसका फुल रिव्यू बताऊंगा। गेमिंग सभी का कैसे हीट होता है, इसमें स्क्रीन, डिस्प्ले, बैटरी सभी की परफॉर्मेंस आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो ओनली फॉर अनबॉक्सिंग के लिए रहेगा दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हाँ, बता दूं कि लैपटॉप मेरे को 50,000 में पड़ा है बिग बिलियन सेल्स में, जो कि मैंने क्रिसमस पे इस लैपटॉप को बाय किया था दोस्तों, इसलिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी हर एक लाइक हमको मोटिवेट करती है। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, आपको एक बता दूं, अगर आप भी लैपटॉप परचेस करते हैं तो इसमें चार्जिंग प्लग लगाने की वक्त आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो कि है वह एक टफ है। इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जैसे ही एक जल्द एक वीडियो उसके लिए भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आप चार्जिंग प्लग लगाते वक्त बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि चार्जिंग प्लग आप जब लगाएंगे तब वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।